Hello my friends, you are welcome in this English YouTube class. I am teaching you clause, and in clause now I am going to teach you subordinate adjective clause. Subordinate adjective clause means a clause that tells something about a noun. ऐसी clause जो संज्ञा के बारे में बताए, that is the adjective clause. I have already taught you the subordinate noun clause. Subordinate noun clause used in place of a noun. A clause that works as a noun, that is the noun clause. But now I am going to teach you subordinate adjective clause. Subordinate adjective clause tells something about a noun. What is noun? Noun means the name of person, name of place, name of thing, and name of animal. That is a noun. And if a clause going to tell something about the name of a person, the name of an animal, name of thing, name of a place, that clause is called subordinate adjective clause. The conjunctions of subordinate adjective clause. Conjunctions. These are the conjunctions of subordinate adjective clause. Subordinate adjective clause की ये conjunction है, यानी subordinate adjective clause यदि जुड़ती है तो इन conjunction से जुड़ी जाती है. These are the conjunctions of subordinate adjective clause. Who, whose, whom, where, when, which, that. These are the conjunctions. If a clause tells about the name of person, यदि clause यदि उपवाक्य किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए आए तो वो clause who, whose और whom से जुड़ेगी. Okay. Where if a clause tells something about the name of place, then that clause combined with where. And if a clause tells something about the time, then that clause combined with when. If a clause tells something about the name of thing and animal, that clause combined with which. And if a clause combined tells something about the name of animal and name of person, then that clause combined with that. So these are the conjunctions of subordinate adjective clause. The meaning of here, who means जो, whose means जिसका, whom means जिसको, where means जहां, where means जब, which means जो या जिसकी, that means जो की. So these conjunctions meaning are I have told you. Who, whose, whom tells something about the person, where tells something about the name of place, when tells about the time, which tells the both animal and thing, and that tells the name of person and name of thing or animal. So these are the conjunctions. Now here are some examples of subordinate adjective clause. So the first example, the man who stands there is my uncle. Who stands there is the subordinate clause because it starts with who, and it tells something about the man. The clause that used to tell about the man and person. ऐसी क्लोज जो किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए है, that clause combined with who, whose and whom. Okay. So here this clause tells about the man. ये क्लोज आदमी के बारे में बता रही है. Man who stands there, आदमी जो वहां खड़ा रहता है, is my uncle, वो मेरे अंकल है. So this clause tells about the man. So it is the adjective clause. ये आदमी के बारे में बता रही है, so ये adjective clause है. किसी के बारे में बताने के लिए, that is the adjective clause. Okay, we can make
these two sentences independent. Okay, like the man stands there, he is my uncle. हम कैसे भी अलग अलग कर सकते हैं सेंटेंस को. The man stands there, he is my uncle. The man is my uncle, he stands there. So we can make separate and we can combine using the adjective clause. Adjective clause का यूज करके हम दोनों को जोड़ सकते हैं और दोनों को अलग कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. I like Mukesh, whose father is an IAS. This clause, whose father is an IAS, this clause comes to tell about the Mukesh. ये क्लोज मुकेश के बारे में बताने के लिए है. So this is the subordinate adjective clause. If a clause comes to tell about the person, यदि क्लोज किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, that is the subordinate adjective clause. और व्यक्ति के बारे में बताने के लिए उस क्लोज के लिए तीन कंजंक्शन है, who, whom. So this clause combined with whose. Look, I like Mukesh, whose father is an IAS. मैं मुकेश को पसंद करता था जिसके पिताजी IAS है. Look, this clause tells about the मुकेश. ये क्लोज मुकेश के बारे में बताने के लिए है. So this is the subordinate adjective clause. ये subordinate adjective clause. Second thing, we can make two independent sentences. Look, I like Mukesh, his father is an IAS. I like Mukesh, his father, full stop, his father is an IAS. Then we can combine both sentences using subordinate adjective clause. फिर subordinate adjective clause का यूज करते दोनों को जोड़ भी सकते हैं and we can make separate sentence, independent sentence. So this is the subordinate adjective clause and we combined it with खुद से जोड़ा है because this clause tells about the मुकेश के बारे में बताने के लिए. Next sentence. The boy whom you saw. The boy, this is the noun boy. Whom you saw, जिसको तुमने देखा. This is the subordinate adjective clause because this clause tells about the boy. ये clause boy के बारे में बता रही. देखो, the boy लड़का, whom you saw जिसको तुमने देखा. कौन सा लड़का? जिसको तुमने देखा. So this is the clause which tells about the boy. ये क्लोज है जो boy के बारे में बताता है. और किसी के बारे में बताने के लिए क्लोज है वो एडजेक्टिव क्लोज होती है. boy whom you saw, लड़का जिसको तुमने देखा. made an accident, एक्सीडेंट हो गया. so this clause tells about the boy and it is the person. boy is the person और person के लिए कोई विशेषता बताने के लिए क्लोज है तो वो who जोड़े whom से जुड़ेगा. So this is the subordinate adjective clause. We can make two separate sentence, independent sentence. Look, the boy made an accident. One, you saw him. Boy made an accident. You saw him. So these are two independent sentences, and we combined it both sentences using the subordinate adjective clause. Okay. Next sentence. I lived in Udaipur. I lived in उदयपुर. मैं उदयपुर में ही lived in उदयपुर. वह उदयपुर में रहता था. Where tells about the name of place. Where I visited last year. जहाँ मैं पिछले वर्ष विजिट की, जहाँ मैं पिछले वर्ष गया. This is the subordinate adjective clause because this clause tells about the उदयपुर. ये उदयपुर के बारे में बता रहा है. ये पूरा क्लोज उदयपुर के बारे में बताने के लिए यूज हुआ. देखो, आई लिव्ड इन उदयपुर, ही लिव्ड इन उदयपुर. वह उदयपुर में रहता था. कौन सा उदयपुर? वेयर आई विजिटेड लास्ट ईयर, जहां मैं पिछले वर्ष से गया. सो दिस क्लोज टेल्स अबाउट द उदयपुर. इफ ए क्लोज टेल्स अबाउट द नेम ऑफ प्लेस, दैट इज द सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज. एंड इन टेलिंग द नेम ऑफ प्लेस वी यूज वेयर फॉर ए कॉम्बिनेशन. जोड़ने के लिए वेयर यूज किया जाएगा. ओके, वी कैन मेक टू सेपरेट सेंटेंसेस लाइक ही लिव्ड इन उदयपुर. आई विजिटेड देयर लास्ट ईयर. ही लिव्ड इन उदयपुर. आई लिव्ड देयर लास्ट ईयर. सो मेक द टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस and we can combine using where as the adjective clause.
Okay, next sentence. I was born in 1989. I was born in 1989. मेरा जन्म 1989 का. When he was 2 years old. When he was 2 years old, जब वह 2 साल का था. This is the subordinate adjective clause because it tells about 1989. ये जो क्लोज है वो समय 1989 दिया हुआ उसके बारे में बता रहा है. I was born in 1989. मेरा जन्म 1989 हुआ जब वह 2 साल का था. जब वह 2 साल का था, ये जो क्लोज है वो 1989 के बारे में बताने के लिए यूज हुई है. सो दिस क्लोज टेल्स समथिंग अबाउट 1989. We can make 2 separate sentences like I was born in 1989. Full stop. He was 2 years old then. He was 2 years old then. So these are 2 separate sentences, but we make them a single sentence using the subordinate adjective clause. Subordinate adjective clause का यूज करते हमने सिंगल सेंटेंस बना दिया. लाइक I was born in 1999 when she was 2 years old, and this clause tells about the 1989. और समय के बारे में जो क्लोज बताने के लिए उस क्लोज को हमें when से जोड़ेंगे. when का मतलब जब. नेक्स्ट सेंटेंस. they buy a TV. They buy a TV. They buy a TV. This is the participle clause. They buy a TV. वे टीवी खरीदते हैं. which is made in India. जो भारत में बनी हुई होती है. which is made in India जो भारत में बनी होती है. this clause is tells something about the TV. टीवी कौन सी जो भारत में बनी हुई है. Sorry, we use here that if a clause combined, if clause tells something about a noun, we put that before that noun. Okay, so here we use that. They buy the TV which is made in India. जो भारत में बनी होती है उस टीवी को खरीदते हैं. So this clause tells something about the TV, a noun, and if a clause tells something about a noun, that is the subordinate adjective clause. यदि कोई क्लोज किसी संज्ञा के बारे में बताने के लिए वो एडजेक्टिव क्लोज होती है. and it tells something about the TV, a thing or animal. if a noun clause that if a clause that tells something about thing or animal, यदि कोई क्लोज वस्तु और जानवर के बारे में बताने के लिए तो वो क्लोज with से जुड़ेगी. ओके, so this clause combined with which or it tells something about TV, so this is the subordinate adjective clause. We can make 2 separate sentences, independent sentence. They buy TV, full stop. They buy TV, full stop. It is made in China. It is made in China. Okay, so these are 2 separate sentences and we combine them using the subordinate adjective clause, using the conjunction which. Okay, next sentence. The horse and the rider, they stand at the gate. This clause comes to tell about the horse and the rider. ये जो क्लोज है वो घोड़े और सवार दोनों के बारे में बताने के लिए है. और if a clause comes to tell the name of animal or king and name of person, then we combine that clause with a that. So this clause comes for the horse and rider. ये क्लोज horse और rider के लिए है, इसलिए इसको that से जोड़ेंगे. और this clause is the subordinate adjective clause, क्योंकि ये संज्ञा के बारे में बताने के लिए है तो ये adjective clause है. The horse and rider that stand at the gate, घोड़ा और सवार जो गेट पर खड़े हैं, looks beautiful, सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं. So this is the subordinate adjective clause example, and it's really important for all of you. Watch my video and learn them. Thank you very much.